Hello and welcome to my channel Learning is Fun. Today's topic is Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest. According to the new syllabus for class 12th, this is the poem number 4. Before I explaining about the poem, let me introduce about the poet Edgar Guest. Edgar Guest was born in 1881 in England and brought to United States when he was only 10 years old. Even he started writing in his career in 1895 when he was only 14 years old. Edgar Guest is also known as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. He was an American writer of newspaper and magazines. In this poem, here it is a very inspirational poem. In this poem, speaker is asking reader whether they have done anything to improve the life of another human being or not. क्या आपने दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ अच्छा किया है? It is up to you whether you will have a better future or not. क्योंकि आज का जो दिन है, आज आप क्या करते हैं, everything decides about your future. तो क्या आपने फ्यूचर के लिए आज कुछ बेहतर काम किया है? Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly for the better future. अगर आपको फ्यूचर बेटर चाहिए तो आज का दिन जो है आपको beautifully you have to plan it. So let's start the poem. Have you earned your tomorrow? Before I start, I want to tell that the poem is full of probing question, interrogative question. Here the poet is telling that Guest presents a numerous number of probing question to his reader about how they have spent their entire day. So, by continuing that, the poet is telling, is anybody happier because you passed his way? मतलब वो यहाँ पे बोलना चाहते, the poet is telling that he begins with the speaker that asking his reader that if they did anything to improve the day of another human being, कैसे आप improve कर सकते हैं? क्या ऐसा करें कि आप जो है दूसरों के लिए भी आप मिसाल बने, दूसरों के लिए यादगार बने. Does anyone remember that you spoke to him today? क्या आपने किसी के साथ इतने अच्छे से बात किया है कि वो आपको उन बातों की वजह से आपको याद करे? This day is almost over and its toiling time is through. So toiling time is a difficult word. So here all the difficult word I have sorted down, jotted down, and I have mentioned here. Toiling time means time spent in hard physical work. So, is there anyone to utter now a kindly word for you? So, in this line, the poet is telling, the guest poet is telling that it is now the end of the day. दिन जो है अभी खत्म होने ही जा रहा है. The hours running out for you to make positive impact. और बोल रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ ही पल बचे हैं जिससे कि आप दूसरों के समय पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सके. The speaker emphasizes this by asking if there is anyone to utter. तो वो एम्फोसिस करने के लिए, ये अपने बात को हाईलाइट करने के लिए वो ये कहते हैं, क्या कोई है जो आपके साथ काइंड वर्ड इन एक्सचेंज आपसे बात करे. मतलब ये कहना चाहते हैं, क्या आप दूसरों के साथ इतने काइंडली हुए कि वो वापस इन रिटर्न आपके साथ काइंडली बात करे, काइंडली तरीके से पेश आए. इसी चीज को कंटिन्यूटी रखते हुए वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु कम अलोंग? यानी आपने अपने फ्रेंड के साथ पूरे दिन में कैसे बिहेव किया है? क्या आपने चेयरफुल वे से उनको ग्रीट किया है, फ्रेंडली वे से उनको ग्रीट किया है, और अ चर्ली शॉट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश्ड इन द थॉन्ग? या फिर अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही फॉर्मल होके बात किया है, बहुत ही सेल्फिश होके बात किया है, और कहीं तो भी भीड़ में आप खो गए, यानी आपने दिखावे की तरह से बात किया है, आपने दिल से उनसे बात नहीं किया. तो अगर आपने ऐसा किया है तो were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? या वो कह रहे हैं कि were you selfish, pure? Means here the poet is telling that he presents the opposite and pushes the reader on their selfish tendency and asks whether you churlish or rude and quickly disappeared in the crowd and rushing off to another task. क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि चलिश या रूड वे में किया है, और यानी कि आप इनफॉर्मल होके फॉर्मल होके बात किए हैं, दिखावे की बात की है, और भीड़ में कहीं तो भी खो गए हैं. अगर आपने ऐसा किया है तो हियर द स्पीकर फील डिस्टेस्ट एट द आइडिया. तो ऐसा अगर आपने किया है तो उनको बहुत ही बुरा लग रहा है, और वो कहते हैं कि अ फ्रेंड, इफ यू हैव ट्रीटेड योर फ्रेंड इन दिस वे, ही सेज that it is your purely
selfish way of behaving in that way. अगर आपने इसी तरीके से अपने फ्रेंड के साथ बात किया है तो ये आपकी सेल्फिशनेस को दर्शाता है, दिखाता है, या फिर वो इनके कॉन्ट्ररी वो पूछ रहे हैं, पोएट जो है इसके ये लाइन के कॉन्ट्ररी वो पूछ रहे हैं, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल, या फिर आपने किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया है कि वो आपके इस बिहेवियर के लिए ग्रेटफुल हो. Can you say tonight in parting with the days that slipping fast, that you helped a single brother of the many that you passed? यानी यहाँ पे again he is asking to his reader कि क्या can you say tonight, आज के दिन जब दिन खत्म हो रहा है, in parting with the days यानी जब days complete होते जा रहा है. यहाँ पे मैंने already mention किया है parting with means to give up, to let go means डे जो है कंप्लीट होने जा रहा है, दैट्स स्लीपिंग यानी दिन जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है. सो आपके पास टाइम ही नहीं है कुछ पॉजिटिव डीड करने के लिए. ऐसे समय पे दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ड, क्या बहुत सारे लोग आपके दिन में से गुजरे हैं, क्या उसमें से किसी कोई एक भी होगा जिसके साथ आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया है. इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, क्या कोई उसमें से भीड़ में से कोई एक इंसान बोल सकता है ये कि आपने उसके साथ इतनी अच्छे से बिहेव किया है, दैट हिज हार्ट इज रिजॉइसिंग यानी आपकी वजह से वो खुश हुआ है, उसकी लाइफ में खुशी आई है. क्या आपने कुछ ऐसा किया है. डज अ मैन हुज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड, मीन्स यहाँ पे बोल रहे हैं डज अ मैन हुज होप वेर फेडिंग, मीन्स ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, मन से उसका जो होप, जब वो होप था यानी आशा थी वो फेड हो रहा था, यानी धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहा था. डिसअपियर यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, फेडिंग मींस डिसअपियरिंग, हियर लूजिंग होप, जिसका होप जो है वो लूज हो रहा था, फेड हो रहा था. तो क्या उसमें आपने पॉजिटिविटी भरी है आपके बिहेवियर की वजह से. तो यहाँ पे पोएट जी ने बहुत ही पॉजिटिव चीजें कही है, और वो उन्होंने कहा है कि क्या ऐसा कोई पल आपने छोड़ा है उसके लिए कि वो बाय हार्ट वो रिजॉइस कर सके आपकी एक्शन की वजह से. नेक्स्ट वो इसी को कंटिन्यू रहते हुए पोएट कहते हैं, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोलोली प्रेजेंट. सोलली यानी यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड, सोलली मीन्स टोटल, टोटली स्पेंट. तो हियर द पोएट इज टेलिंग दैट द स्पीकर आस्क्ड टू हिज रीडर दैट इफ द डे इज लॉस्ट, इफ इट वॉज सोलली और बैडली स्पेंट, यानी अगर आपने टोटली बैडली इसको स्पेंड किया है तो आप कह सकते हैं दैट योर एंटायर डे हैज बीन वेस्टेड. डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट यानी डिससैटिस्फैक्शन इसको बोलते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होना. सो हियर इन दिस लाइन द पोएट इज टेलिंग दैट कि ऑन द अदर हैंड द पोएट इज टेलिंग दैट इट वॉज वेल स्पेंड when you will feel a trail of kindness making one's path through the day. मीन्स क्या बोल रहे हैं, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, यानी तभी आपको अपनी जो चिन्ह, यानी आप तभी अच्छा बोल सकते हैं जब आपको जो काइंडनेस का, जो आपने कुछ भी अगर अच्छा किया है पूरे दिन में तो उसका मार्क आपको दिखे, यानी आपको इन रिटर्न आपको मिले. मार्क कैसे दिखेगा, अगर आप जिसके साथ काइंड थे वो भी आपके साथ काइंडली बिहेव करे तो दैट शोज that you did something good to that person. तो अगर आपको रिटर्न में भी ऐसा मिल रहा है, that means your day has been spent beautifully in positive way. आपने कुछ अच्छा किया है, या फिर आपने किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा किया है कि बदले में भी आपके साथ बुरा हो. तो इसीलिए इस लाइन में, सेकेंड लाइन में उन्होंने बोला कि और a scar of discontent, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो रिटर्न में भी आपको वही मिलेगा. तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहे हैं तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैंने क्या इसके साथ कुछ बुरा किया है कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है. तो इसको अगर और कंफर्मेशन मिलना है तो व्हाट यू कैन डू, पोएट खुद ही आपको सजेस्ट कर रहे हैं, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, जब आप सोते हैं दैट इज स्लम्बर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से. तो क्या बोल रहे हैं, इसको एनालाइज करने के लिए इवन गॉड विल ऑल्सो हेल्प यू. हाउ, जस्ट क्लोज योर आईज and what you will feel in your slumber, in your sleep, that do you think that God would say. आपको क्या लगता है, आप अपने हार्ट से पूछिए, आपको क्या लगता है कि क्या आपने अच्छा किया था, कि कुछ अच्छा किया था लोगों के साथ, आपने अपना डे कैसा स्पेंड किया.
then they can close. तो ऐसे के लिए क्या करना है? You can close your eyes in slumber, यानी deep sleep, and think about your whole day, and what you can feel that God would have to say. तो आपको क्या लगता है in return God आपको क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे आपको? You have earned one more tomorrow by the work you did today. तो अगर अच्छा किया है, तो after considering the response of the God, a reader feels as if they have done well, then tomorrow is assured. यानी कि अगर आपने today if you have did something well, then tomorrow is assured. One more day will be added in your life. Otherwise, God might look kindly on the action or inaction of the day and tomorrow might not come. तो लास्ट लाइन में वो क्वेश्चन छोड़ के गए हैं रीडर के लिए. वो खुद को वो बोल रहे हैं रीडर को, अपने रीडर को बोल रहे हैं, जस्ट एनालाइज योर सेल्फ एंड सी दैट डू यू डिजर्व वन मोर टुमारो. क्या आपने आज कुछ ऐसा अच्छा किया है कि आप डिजर्व करते हैं कि आपकी जिंदगी में एक और लाइफ मिले, एक और डे ऐड हो. So it is such a beautiful poem. I hope you have understood the meaning of each and every line of the poem. So let me explain you about the figure of the speech. So first one is interrogation and alliteration. So interrogation आप पूरे entire poem में ही देखेंगे कि the maximum line are in the interrogation figure of speech. वो question probe कर रहे हैं to the reader. Alliteration क्यों है? Because the consonantal sound have been repeated. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कॉन्सोनेंटल जो लेटर जो है वो रिपीट हुआ. जैसे यहाँ पे हैप्पियर का एच एंड हिज का एच, इट इज रिपीटेड. सो नेक्स्ट वन लेट्स सी, दैट इज alliteration and interrogation. Again interrogation because you can see the sentence is ending with question mark, therefore it is an interrogation. Again alliteration because the consonantal sound have been repeated. Next is this day is almost over and its toiling time is through. So here it is alliteration because of the you can see that lots of T have been mentioned many a times. The consonantal T is being repeated. So next is there anyone to utter now a kindly word of you? Again question. So it is an interrogation and inversion also because the words are not arranged in a proper way. So next is, did you give a cheerful greeting to the friend who came along? यहाँ पे again interrogation and alliteration. Interrogation because the sentence has ended with question mark and interrogation because of the repetition of consonantal sound. So next is on or a cheerly shot of howdy and then vanish the thong. Again interrogation because of question mark. Clear? So next is alliteration, oxymoron and paradox. So here because opposite two terms are used, that is selfish and pure. These both are contradictory to each other, therefore it is oxymoron. And paradox because it is totally absurd because a selfish cannot be pure, therefore it is paradox. And alliteration because of the repetition of the consonantal sound. So let's move next. Or is someone mighty grateful for a deed you did today? Alliteration and interrogation because of the same reason, that is consonantal sound is repeated, and also that you can find interrogation because of the question mark. The sentence is ended with the question mark. Next is, can you say tonight in parting with the days that slipping fast? That is alliteration because of the repetition of the consonantal sound. Next is again alliteration, the same, that is repetition of the consonantal sound. You can find here that T and T here many times it is been repeated, therefore it is alliteration. Next is alliteration and synecdoche because is a single heart rejoicing. Here a heart means it shows a part of the whole, means is a single heart. Heart मतलब heart की बात नहीं कर रहा है. Here single heart means heart जो है वो human की बात कर रहे हैं, all the human which you have crossed. तो heart so human is a whole और उसका एक part लिया गया as a heart is a part, therefore it is synecdoche. Next is, does a man whose hope were fading now? So it is again interrogation because of the sentence ends with a question mark. So next is, that is interrogation and tautology because interrogation because the sentence is ending with
question mark here, and tautology because the same word has been repeated but they are different, same meaning but different word. Here waste and lose, so it comes under tautology. Same meaning but different word is used. Same एक ही चीज को डबल बार बोल देना, that comes under tautology. Next is interrogation because the sentence have ended with a question mark. Next is, as you close your eyes in slumber, do you think that God would say? Here it is alliteration because the repetition of the consonantal sound, that is Y. You can see U Y है, यहाँ पे your में भी Y है and you again Y. So it is alliteration. The last, that is, you have earned one more tomorrow by the work you did today. Again interrogation and alliteration because the sentence is ending with question mark, and alliteration because the consonantal sound is repeated. So I hope you have understood the figure of speech of each and every line and also the meaning of the poem. So let's move towards next, that is the rhyming scheme. Rhyming scheme here it is A A B B C C A A D D E E. You can say see here, way today, throw you. So ये सब जो मैच हो रहा है तो A A B B C C A A D D E E, ये this is the rhyming scheme of the poem. So let's see the moral of the poem. Today's good investment is tomorrow's gain. Means आप आज क्या करते हैं वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है. We should work honestly for better future. अगर आपको फ्यूचर अच्छा चाहिए तो आपको प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा. It doesn't matter who you are or where you come from. ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है आप कौन से जगह से बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो. Everything belongs to your action. आप क्या प्रेजेंट में आप क्या एक्शन करते हो वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है. फॉर द your future is totally depend on it. Responsible to lead a good life ahead. आपको good life चाहिए तो your present should be also good. The poet is making us aware of our duties and responsibilities to gain a fruitful future. So through this poem, the poet is telling how you can gain your fruitful future. आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को बेटर एंड बेस्ट बना सकते हो by making your present better and best, because everything in the future depends on your present today, how you are spending your present. So investing something good today means earning everything tomorrow. यानी आज अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न विथ इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा, टुमारो, दूसरे यानी आने वाले कल में आपको मिलेगा. So I hope you have understood whole poem, its meaning and also the figure of speech and also the moral of the poem. So thanks for watching my video. Please like and share with your friends so that your friend could also learn. Do comment in the comment section box. Subscribe my channel. Press the bell icon for the notification of the new video. See you in the next video. Okay, bye.